Hi and welcome. We all know that coding requires patience. Coding requires hard work. Coding requires time. Coding requires practice, just like any other game. जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, अब क्रिकेट में अगर हमें हुक शॉट मारना है, स्वीप शॉट मारना है, so that requires practice. A player from a national team or a state team practice, practice, practice any particular shot that they want to play a lot of time. That also requires patience. That also requires hard work. So coding is also like any other game. You need to give it time. You need to give your everything and you need to sacrifice your playtime if you want to be good at one particular thing. And we need to be good in coding, in data structures and algorithms if we want to get placed in top tech companies. Correct? So with this, let's look at competitive programming. How competitive programming helps us in our coding journey. How competitive programming helps us to improve the logic building and problem solving skills. क्योंकि हमें इंटरव्यूअर लॉजिक बिल्डिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर ही टेस्ट करेगा यूजिंग द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स क्वेश्चंस. एंड हम इस वीडियो में पूरे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का रोड मैप देखने वाले हैं कि व्हाट इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, okay, which language we should choose, data structures and algorithms, how to improve, and various websites for competitive programming. Fine. ये वीडियो बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए, सो इस वीडियो को पूरा देखिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सो व्हाट इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग? आखिर ये किस बला का नाम है? सो जस्ट लाइक एनी अदर गेम, इट्स अ कॉम्पिटिशन बिटवीन कोडर्स. On different competitive programming websites, for example MyCode, there are contests that are going on. Fine. And it is nothing but a coding contest between coders, let's say. Just like the cricket players or chess players compete with each other, and accordingly they are given some rating. So here also on different platforms you compete with other coders, and depending on how you perform you are given some rating, some points. Every platform has different rating system. Fine. And on these platforms you can also go and practice questions which are not in the contest right now. Okay, they have occurred in the contest before, or they are just there for your practice. So there are different websites. Accordingly you can see they are topic wise divided in this MyCode website. Fine. And you can go and practice the questions present in each topic. Okay, so in competitive programming, it's nothing but a competition between coders. Okay, it's a sport of coding. And now we'll see how it helps you. What is the importance of competitive programming? Fine. So सबसे पहले तो ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स को बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करता है, बिकॉज वी आर कंटिन्यूसली सॉल्विंग क्वेश्चंस. ओके, एंड ऑल्सो जब हम एक कोडिंग कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सो इट्स अ टाइम कंस्टेंट एनवायरनमेंट. इट्स अ प्रेशराइज एनवायरनमेंट कि लेट्स से हमें 2.5 आवर्स में 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हमें 3 आवर्स में 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. सो हाउ शुड वी डिवाइड द टाइम टू सॉल्व द कोडिंग क्वेश्चंस? एंड वी हैव टू थिंक क्विकली also in an optimized manner, because an optimal solution ही एक्सेप्ट होगा. So in a time constrained pressurized environment, thinking quickly and thinking in an optimized manner, इन सबकी प्रैक्टिस हमें कोडिंग कॉन्टेस्ट से मिलती है. जितने ज्यादा आप कोडिंग कॉन्टेस्ट दोगे आप उतने ज्यादा इस चीज से इंप्रूव होते हैं. प्लीज इस बात को समझिए. फाइन. सो कोडिंग कॉन्टेस्ट हेल्प्स अस अ लॉट, and we will also see how to solve the questions in an optimal manner. Okay, how to divide your question steps, what are the solving steps, okay, for a particular question. And we'll also see कि अगर कोडिंग कॉन्टेस्ट में कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो कैसे आप उसका एडिटोरियल रीड कर सकते हैं, कैसे आप उसके दूसरे कोडर्स के कोड देख सकते हैं. और हम ये भी देखेंगे कि अगर आपसे कोई कोडिंग कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है. ठीक है, उसका एडिटोरियल रीड करिए कॉन्टेस्ट एंड होने के बाद, या दूसरे कोडर्स का कोड देखिए, उनको समझिए, समझिए कि क्या लॉजिक उन कोडर्स ने यूज किया है. फिर आपको पता चलेगा ओके ओके ऐसे सिचुएशंस में ऐसा लॉजिक, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर, ऐसा एल्गोरिथम यूज कर सकते थे.
अगली बार अगर वैसी कोई सिचुएशन आपको दूसरे किसी क्वेश्चन में दिखी, so you will know that which data structure or which algorithm or which type of logic you can apply. At least you will have a starting point. Fine. So it's a continuous learning phase. It's a continuous learning journey. And आप एक इंटरव्यू को सोचिए, आप फेस टू फेस इंटरव्यू में बैठे हैं and in 60 minutes you have to solve two questions. Again 60 minutes, two questions, let's say. So again it's a time constrained pressurized environment. And if you have the practice to think quickly and optimally in a time constrained pressurized environment, तो आप इंटरव्यू में भी अच्छा करेंगे, क्योंकि आपने ये चीज पहले बहुत बार कर रखी है, क्योंकि आपने कोडिंग कॉन्टेस्ट बहुत बार दे रखे हैं. दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. फाइन. जब हम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, हम कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, हमें उसकी रेटिंग मिलती है. आप अच्छा करोगे तो अच्छी रेटिंग मिलती है, अच्छा नहीं करोगे तो कम रेटिंग मिलती है. एंड वी कैन यूज दैट प्रोफाइल in our resume. That suppose you have solved 500, 700, 800 plus coding questions on different coding platforms. So you can write that point in your resume. The interviewer will know that you have good data structures and algorithm skills. That will help your resume to get selected. Again, one of the importance of competitive programming. Now, moving forward, the next question is, so which language to choose? C, C++, Java, Python. Sir, किस language से start करें? तो अगर मैं C की बात करता हूँ, so C has very limited inbuilt help, inbuilt library support. Fine. हमें competitive programming या DSA coding में inbuilt library support का काफी यूज होता है. It helps us to code faster, to implement faster. Fine. So मैं C को recommend नहीं करूंगा, especially competitive programming के लिए. Now the next is C++. It is one of the best language out there. It has excellent community support, excellent inbuilt library support. But one of the highly recommended languages to choose for competitive programming. It is faster as well compared to Java and Python. Coming to Java, again, highly recommended because of excellent community support. It's a little slower than C++, but that's absolutely fine for competitive programming. These two languages are your best choices, C++ or Java, depending on your taste. Try them out for 2 to 3 days. See which language you are preferring more in the implementation. Go with that language. Both are very, very good languages. Python is easier to learn, I know, but it is very much slower compared to C++ and slower compared to Java as well. So for competitive programming, I would not recommend Python, but C++ and Java, excellent. Fine. So any one of these two languages you can choose. Coming to data structures and algorithms. So data structures and algorithms का पूरा रोड मैप हमने अपने YouTube चैनल इस वीडियो में समझा रखा है. Okay, here is the link for that particular YouTube video. Find the roadmap of data structures and algorithms. अब इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा क्या क्या टॉपिक करने चाहिए. एडवांस टॉपिक्स के बारे में भी इसी वीडियो में है. Fine, it will help you a lot to get started with data structures and algorithms. Fine. Data structures and algorithms obviously हमें करनी ही होंगे. इसके साथ साथ हमें मैथमेटिक्स भी करनी ही करनी है. For competitive programming, maths is very, very important. Fine. Probability, permutation, combination, okay, GCD, LCM, prime numbers, fine, number system. There are advanced topics as well in mathematics that we need to do for competitive programming. Okay, so आपको उस वीडियो से आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा कि आपको ये चीज़ पढ़नी है for competitive programming and for placements. Fine, क्योंकि data structures and algorithms का सिलेबस स्टैंडर्ड है, कुछ एडवांस टॉपिक्स ऐड होते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बस. अब क्या हमें जब हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कर रहे हैं तो पूरा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कवर करना है, उसके बाद कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है, या फिर हम लोग पार्ट बाय पार्ट भी कर सकते हैं, बीच बीच में हम लोग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वेबसाइट्स पर जाके कॉन्टेस्ट दे सकते हैं. सो मेरा ये मानना है कि हम लोग बीच बीच में भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब आप रोड मैप देखोगे, सो विल स्टार्ट विथ फंडामेंटल्स, एरेज, स्ट्रिंग्स, रिकर्जन, सर्चिंग, सॉर्टिंग. ओके, मैथ, सर्चिंग, सॉर्टिंग. सो जब हम ये सब टॉपिक कर लेते हैं सॉर्टिंग तक, उसके बाद अगर आप किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, सो आप करो, क्योंकि स्टार्टिंग के 1 और 2 क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं किसी टॉपिक में से होंगे. बीच में से भी हो सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं किसी टॉपिक में से होंगे. सो आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिए. यू विल गेट एक्सपीरियंस, यू विल गेट द एक्सपोजर. फाइन. एंड यू ऑल्सो नो हाउ मच यू हैव प्रैक्टिस्ड एंड लर्न, ओके,
whether you are able to implement that knowledge or not in optimized manner. फाइन, उसके बाद हमारे डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट होते हैं लिंक लिस्ट, टैग, क्यू, ट्री, हीप, ग्राफ. करेक्ट, आप ये कवर कर लीजिए लिंक लिस्ट, टैग, क्यू, ट्री, हीप, ग्राफ. ओके, एंड उसके बाद से आप और जब पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको देखेंगे और क्वेश्चंस इन टॉपिक्स में आ रहे हैं एंड यू विल बी एबल टू पार्टिसिपेट एंड सॉल्व मोर क्वेश्चंस नाउ. फाइन, देन आता है हमारा बैक ट्रैकिंग, ग्रीडी, डिवाइड एंड कॉन्कर, डायनामिक प्रोग्रामिंग, सेगमेंट ट्रीज, ट्राइज, string algorithms, okay, Fenwick tree, all these, game theory. Then we also have computational geometry. There are several other topics as well other than the standard DSA syllabus. Fine. जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स का आइडिया लगेगा. जैसे जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट कोडर्स के लॉजिक और कोड देखेंगे, लॉजिक को समझेंगे, आपको समझ में आएगा कि ओके ये टॉपिक भी मुझे पढ़ना है. ओके, यू विल अपस्किल योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेस्ट एंड एडिटोरियल्स एंड कोड्स ऑफ डिफरेंट कोडर्स. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने कोई क्वेश्चन ट्राई किया, मान लो वो क्वेश्चन किसी कोडिंग कॉन्टेस्ट का नहीं है, आप नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, आपने क्वेश्चन को ट्राई किया और आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, लेट्स से आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तो आपने जल्दी से गूगल पे सर्च किया या अगर वेबसाइट में ही एक तरीका है कि आप दूसरे कोडर्स को कोड दे सकते हो, आपने कोड देखा और आपने फिर समझा और कोड कर दिया. ओके, हर बार ऐसा नहीं करना है. फाइन, बिकॉज पहले हमें खुद जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपनी साइड से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, जितना ज़्यादा हो सके. फाइन, you have to give your 100% before trying to see others code. Fine, yes, if you have solved a question properly on your own and then you want to look at different codes just to know if there is some other logic to solve the same question, absolutely do that. ये तो करना ही है, absolutely do that. You will improve your logic building a lot and you will also have different, what you say, ideas when you solve different questions in the future using this one. फाइन, नाउ अगर आप किसी क्वेश्चन का एडिटोरियल रीड करते हैं, सपोज यू आर ट्राइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, यू वांट टू रीड द एडिटोरियल. फाइन, यू रीड द एडिटोरियल लाइन बाय लाइन और जैसे ही आपको ऐसे एक पॉइंट मिले क्योंकि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, आप एडिटोरियल को पढ़ना वहां रोक दीजिए. जस्ट स्टॉप रीडिंग द एडिटोरियल एट दैट पॉइंट. एज सून एज यू फाइंड वन ऑफ द लाइन्स दैट गिव्स यू अ हिंट टू मूव फॉरवर्ड, द लाइन which you have not thought before, new information, and try to solve the rest of the question on your own. If again you are not able to, start reading again line by line and again stop at a point which is giving you a different information which you have not thought of and try to solve the question from that point onwards. Suppose you are not able to solve, you read 10% of the editorial and solve 90% of the question on your own. That's a very good thing. If you read, let's say, 40% of the editorial and 60% of the question on your own, good, fine. If you read 70% of the editorial, 30% of the question on your own, okay, better than reading 100% of the editorial and solving 0% of the question on your own. Everything is better than 100 and 0 at that particular point. At least you have tried to solve some question on your own by taking some help, not the complete algorithm, not the complete help. Okay. So that way, with the help of hints, you will be able to solve the question better than seeing the whole solution and then solving 0% on your own. Okay, fine. Now, how to improve logic building and problem solving? So, मैं कुछ steps बता देता हूँ. जब भी आप problem solve करते हैं, तो try to see these steps, try to use these steps. आप पहले problem statement को अच्छे से समझिए. Divide the problem into two parts, what the problem is saying and what the problem is asking. Okay, बाकी की स्टोरी डिस्कार्ड कर दीजिए, मेन पॉइंट्स लिखिए, प्रॉब्लम क्या कह रही है और प्रॉब्लम को हमसे क्या चाहिए. फाइन, सैंपल टेस्ट केसेस का यूज कीजिए टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. नाउ द सेकंड पॉइंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द लर्निंग फेज डू नॉट डू दिस, दैट टेस्ट केस क्रिएशन एंड एनालिसिस. After you have understood the question, constraints are provided to you, create 10 to 15 at least 10 to 15 टेस्ट केसेस ऑन योर ओन. उन टेस्ट केसेस को एनालाइज कीजिए एंड ट्राई टू बिल्ड सम लॉजिक. सिर्फ सैंपल टेस्ट केसेस से डायरेक्टली लॉजिक बिल्डिंग पे जंप मत कीजिए. फाइन, क्रिएट योर ओन टेस्ट केसेस. दोस टेस्ट केसेस विल रियली हेल्प यू आउट, नॉट जस्ट इन लॉजिक बिल्डिंग
but in the last step as well, dry run and debug. And anyway, जब हम कोई कोडिंग कॉन्टेस्ट देते हैं या फिर हम इंटरव्यू में बैठे हैं एंड कोड में कुछ इशू है, तो हमें टेस्ट केस क्रिएट करना ही है उस टाइम पे, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इशू, वेयर माई कोड इज गोइंग रॉन्ग, व्हाट टेस्ट केस आई एम नॉट हैंडलिंग. फाइन. सो जब हमें वो काम करना ही है, so why not practice it beforehand? When you are in the learning phase, when you are solving the problems for practicing, okay, create test cases as much as possible, because this will help immensely in the long run. It may seem that it is taking a lot of time, but it will help you immensely in the long run. Fine. Next, using the analysis, try to create some logic, think on it. Fine. Okay, there will be some logic that will be coming to your mind. If a logic is coming to your mind, do not directly jump to implementation, especially in the learning phase. Write the algorithm down, write the pseudocode down at least. It will give you a better clarity on what you are thinking. Instead of directly jumping to implementation, you will have a very good clarity. Okay, this is what I have to do in each line. This is what I have to initialize. This is what I have to declare. This I will here use for loop, here use while loop, so on and so forth. Maybe while writing it down, some other condition you might be able to get. Okay, this condition I was not handling before, now I'm handling that condition now. ऐसा हो सकता है, correct? And then we move to implementation. अगर implementation में कुछ issues आ रहे हैं, so आपको trace करना है, dry run करना है. Fine. पेन एंड पेपर पे कोड की लाइंस को और वेरिएबल्स की वैल्यूज को लाइन बाय लाइन कंपाइल करना है. जो कंपाइलर हमारा काम कर रहा है, लाइन बाय लाइन देख रहा है, वो आपको खुद बैठ के पेन एंड पेपर पे करना है ऑन द टेस्ट केसेस व्हिच यू हैव क्रिएटेड इन स्टेप 2. और उन टेस्ट केसेस में कुछ इश्यूज नहीं होता है, और टेस्ट केसेस क्रिएट करो. डिबगिंग स्टेटमेंट्स को यूज करो. आप अपने कोड में डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट्स ऐड करो डिफरेंट पोजीशंस पर, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड एवरी पार्ट ऑफ योर कोड. फाइन. ऐसा आपको पता चलेगा कि ओके, मैं सोच रहा था कि 18th लाइन पे वेरिएबल्स की वैल्यू ये होनी चाहिए थी, बट ये नहीं है. सो मतलब 18 लाइन से ऊपर मुझे कुछ मेरे कोड में कोई इशू है, क्योंकि मेरी थिंकिंग से मैच नहीं कर रहा है. करेक्ट? सो दैट इज ऑल्सो हाईली इंपॉर्टेंट स्टेप, हाईली टाइम टेकिंग इन द बिगिनिंग, बट वेरी वेरी मच रिकमेंडेड. फाइन. आई विल ऐड अ ड्राई रन प्लेलिस्ट इन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, फाइन. सो ये स्टेप्स आप फॉलो कीजिए. ओके, एंड आई होप यू विल improve your problem solving and logic building skills with these steps, and you will be able to solve more questions, and you will be able to reduce the probability of getting wrong answers, runtime errors, if you follow the steps properly. The main point is reducing these probabilities. जितना कम हमें wrong answer और runtime error मिलेगा, उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होते हैं कोडिंग करने के लिए. नहीं तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. जब हमें कुछ लॉजिक नहीं सूझ रहा है, या बहुत बार रॉन्ग आंसर और रन टाइम एरर आ रहा है, इन फ्रस्ट्रेशन के टाइम हम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप, क्योंकि ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है. इस टाइम पे रिलैक्स, थोड़ी देर रुकिए, रिलैक्स कीजिए, कूल डाउन योर माइंड, टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स, वॉच ओल्ड फोटोज with your of your family, or talk with some of your friends. Just bring a smile to your face in 5 to 10 minutes. Okay, cool down your mind and then think again. Maybe that will help you to give you a better perspective, because your mind is cooled down. Fine. Okay. Now, different CPK websites. So we have mycode.prepbytes.com. Fine. We have CodeChef. We have CodeForces. Fine. We have HackerEarth. We have HackerRank. There are so many websites, and you can select any website that you like. Okay, in the learning phase, I would highly suggest you to go for the personalized mode of MyCode. Every topic contains specific questions. Fine. Also here, if you see the topics will be logged initially. So if you are in fundamentals, other topics will be logged until you solve 75% of the fundamentals. Next topic will not get logged. And all the questions in, let's say, recursion will be solved only using recursion and the previous topics. So if you have not learned other topics, that will not come. So that is why I highly suggest you to go for personalized mode. It is free. Fine. Okay, I'll share the link. Okay, so आपको practice करती रहनी है. The main point of competitive programming is practice, nothing else. Fine, because that will help you to clear the interview rounds as well, because you are good in problem solving and logic building. Fine. So if you have liked this particular video, okay,
do click on the like button, subscribe to our YouTube channel, comment, suggest what type of videos we should make more. Okay, comment that down in the description box below. Fine. Thank you so much.